Thank you so much for joining today's session. आजर सेशन इट्स गोना बी रियली इंटरेस्टिंग कहीं ना ए सेशन रे मु बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ डिस्कशन करबा को चाहूची व्हिच इज अबाउट गोइंग टू ऑफिस जोटा आपण थंबनेल रे भी देखिथिले राइट से विषय रे मु आजर सेशन कंडक्ट करिया को जाउची तो ए जो पर्टिकुलर सेशन रे मु आपण देखि परतबे कि मु सब डायलॉग प्रैक्टिस गुडी को आणुची कहीं ना हमर डे टू डे लाइफ रे सेटा ही इंपॉर्टेंट आमे इंग्लिश सीखुचे सो दैट वी कैन कम्युनिकेट विथ पीपल वी कैन कन्वर्स विथ द पीपल सेति लागि आमे सीखुचे आउ मु ए प्रकार सिचुएशन काहे कि आउची काहे ना दीज आर वेरी मच रेलेवेंट टू आवर डे टू डे लाइफ तेणु आपण ए जो पर्टिकुलर सेंटेंसेस गुडी को अछि जोटा कि ओडिया रे अछि मु ताको इंग्लिश रे ट्रांसलेट करबी आउ जितेबाला ट्रांसलेट करी से आपण जानी परिबे जे बहुत इजीली एक्चुअली ग्रामर कहया को गले समस्त भाबंती इट्स रियली वेरी डिफिकल्ट वी कांट डू इट बिकॉज इट्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड किंतु आजिर एई सेशन रे आपण बहुत इजीली जानी परिबे जे ग्रामर ता कोन आ पर्टिकुलरली टेंस द मोस्ट इंपोर्टेंट टेंस कोन सेटा बहुत इजीली बुझी परिबे सो लेट अस स्टार्ट विदाउट एनी डिले एटी देखंतो दिस इज अ कन्वर्सेशन बिटवीन रीता एंड आलोक गोइंग टू ऑफिस तुम्हें प्रतिदिन ऑफिस को जाओ तुम्हें प्रतिदिन कौन ऑफिस को जाओ ताकू आमे इंग्लिश रे ट्रांसलेट करबा तुम्हें कौन प्रतिदिन ऑफिस को जाओ अच्छा तारो सी उत्तर बंदुची हां मु जाय ता माने कोन एई जो घटनाटा हुए सेटा होची कोन सेटा होची तुम्हें केते बेले घरु बाहर मु सकाळे 9 टा रे घरु बाहर तो सकाळे 9 टा रे घरु बाहर एरो जो ट्रांसलेशन टा करबा अगर गोटे छोटो जिंसटा मु आपन को पछरे को चाहूची तो ए जो घटनाटा होची जने पछरुची कि तुम्हें कोन प्रतिदिन ऑफिस को जाओ हां मु जाय तुम्हें केते बेले घरु बाहर दे आओ आपन को भी के पछर परे तुम्हें कोन स्कूल डेली जाओ छुआ को छाड़ी कि तुम्हें कोन सबुदिन वेजिटेबल किने को जाओ हां मु जाय नले प्रति सप्ताह थरे जाय এই जो घटना गुड़िक होची से गुड़िक को भलिया घटना से गुड़िक होची दैनंदिन घटना which is happening on a regular basis जो घटना गुड़िक सब बेले होची राइट एग्जैक्टली से जिंसटा आपण जदी बुझी जिबे ना आउ आपण टेंसेस विशेष कंफ्यूजन रहिबनी काहे कि ना देखंतु ए जो घटना गुड़िक जोड़ा हुए which happens on a regular basis okay regular basis right these actions are called falling under present simple tense right present simple tense जैसे कि the sun rises in the east I go to office at 10 o'clock ये जो जिंस गुड़ाक होजी ताको हमें present simple tense कहिबा राइट तो ये जो आपनकर जो अच्छी हमर डायलॉग प्रैक्टिस ता सेटा टोटली प्रेजेंट सिंपल टेंस रे ही अच्छी सो लेट्स स्टार्ट एंड ट्राई टू ट्रांसलेट ईच ऑफ द सेंटेंसेस ओके सो फर्स्ट वन कौन कहूची से एटा कहूची तुम्हें कौन सब दिन ऑफिस को जाओ डू यू गो टू द ऑफिस every day do you go to the office every day right तो एटा होची आपनकर प्रेजेंट सिंपल टेंस रो फर्स्ट सेंटेंस डू यू गो टू द ऑफिस एवरी डे रे कोन एवरी डे होची टाइम एक्सप्रेशन एवरी डे टा होची आपनकर टाइम एक्सप्रेशन जेमति कि डू यू विजिट द टेंपल एवरी मंथ right do you visit the temple every month more time expression doji do you go and watch movies every Saturday or every Sunday एडा को होची टाइम एक्सप्रेशन राइट तनो एडा को होची हमरो बहुत इंपोर्टेंट सेनो से जो कोची तुमी प्रतिदिन ऑफिस को जाओ डू यू गो टू द ऑफिस एवरी डे सेति लागि हम जानि परिबी जे एटा प्रेजेंट सिंपल टेंस रे अछि राइट डू यू गो टू द ऑफिस एवरी डे राइट तो आलोक कोन कहूची हां मु जाय yes I do yes I do आपण चाहिले yes I do शॉर्ट फॉर्म रे कहि परिबे नहले आपण चाहिले जदि पूरा सेंटेंस पढाबो चाहबे yes I go to the office every day एक्चुअली लॉन्ग सेंटेंस आमे आगुरु करूथले
କିନ୍ତୁ धीरे धीरे आम शॉर्ट सेंटेंसेस करने को पसंद करूँ तेणु येस आई डू भी कहीदेले भी हम तापर से पचार तुम्हें केतेबेले घर बाहर तुम्हें केतेबेले घर बाहर when do you leave home when do you leave home तुम्हें केतेबेले घर बाहर इटा हमर जनरली कथाबार्ता पचार राइट तुम्हें केतेबेले घर बाहर when do you leave home ओके नाउ नेक्स्ट मु सकाळ 9टा रे घर बाहर मु सकाळ 9टा रे घर बाहर मु सकाळ 9टा रे घर बाहर आई start at 9 in the morning I start at 9 in the morning right मु सकाळ 9टा रे घर बाहर I start at 9 in the morning right आपण 9 in the morning कोइ परिबे और जदी आपण चाहिबे am भी लगाई परिबे anyone okay either 9 am or in the morning anyone would do okay so I start at 9 in the morning तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन जी पिता जे तुम्हें केमिति ऑफिस को जाओ तुम्हें केमिति ऑफिस को जाओ हमको सेटा जनरली पचारन राइट जो जगह को हम जाइतु तुम्हें एटी केमिति आसिलो सो से पचार जे तुम्हें केमिति ऑफिस को जाओ हाउ डू यू go to your office how do you go to your office right how केमिति how do you go to your office okay तापरे सेकंड को से मु बस रे जाए नले मु बाइक रे जाए I go by my bike I go by my bike केमती जाए बाइक मु द्वारा जाए I go by my bike ओके तापर से पचलची जे रास्ता रे भीड़ थाए रास्ता रे कोन भीड़ थाए do you have traffic on the road do you have traffic on the road right रास्ता रे कोन भीड़ थाए do you have traffic on the road right से कोन कहूची रास्ता रे भीड़ थाए हां सकाळ समय रे भीड़ थाए yes there is traffic in the morning there is lot of traffic there is lot of traffic in the morning there's lot of traffic in the morning hours today natural kotha right there's lot of traffic in the morning hours right से तार उत्तर से बढिया देला तुम्हें समय रे तुम्हें को समय रे ऑफिस पहुंच डू तुम्हें को राइट टाइम रे पहुंच तुम्हें समय रे ऑफिस पहुंच तार हमें केमती कहबा डू यू रीच योर ऑफिस ऑन टाइम डू यू रीच योर ऑफिस पहुंच माने रीच डू यू रीच योर ऑफिस ऑन टाइम ठीक टाइम रे माने ऑन टाइम डू यू रीच योर ऑफिस ऑन टाइम तुम्हें को समय रे ऑफिस पहुंच yes I do से को पूछी हां मु पहुंचे तापरे ऑफिस रे तुम्हें कोन करो सेटा जनरली हमें पचछ तुम्हें तमरा एक्चुअली काम कोन नो ऑफिस रे तुम्हें कोन करो ऑफिस रे तुम्हें की प्रकार काम करो right what do you do at your office तुम्हें ऑफिस रे की काम करो राइट कोन करो से उत्तर रे कोन दोची से दोची मु कंप्यूटर रे काम करे एवं ईमेल चेक करे I work on my computer and check my emails I work on my computer and check emails right I work on my computer and check emails मु कंप्यूटर रे काम करे on my computer preposition यूज करबा I work on my computer and check
emails. Okay, ତାପରେ ସେ କଣ କହୁଛି ତୁମେ break ନିଅ, right? Do you take breaks? Do you take breaks or do you have breaks? Do you have or take breaks, right? तुम्हें ब्रेक नियो ना एट अ स्ट्रेच काम करो ना से पचाउची डू यू टेक ब्रेक्स, राइट? से कोन उत्तर कहूची यस दी परे यस यस आई yes I do in the afternoon. Yes I do in the afternoon. Yes I do take a break. Yes I do take a break. ଯଦି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ को कंप्लीट करबा चाहउछन्ती पूरा पूरी कहब चाहउछन्ती yes I do take a break in the afternoon. Yes I do take a break in the afternoon, right? तापर से को पचाउछे तुमे केते बेले ऑफिस रु फेर, तुमे एटा बहुत कॉमन हमर सेंटेंस, राइट? हमर डे टू डे लाइफ रे बहुत ही यूजफुल सेंटेंसेस होडी पड़ेगा तो अपन चाहिए ताकू एग्जैक्टली सेम टू सेम अपन लेखि कि तीन चार थर प्रैक्टिस करले भी कहा संगे बहुत इजीली कन्वर्सेशन कर परिबे। ए पे भीतर किछि कोनोसी वोकैबुलरी की टेंसेस भीतर हमकु पसिबर नै, राइट? तुमे केते बेले ऑफिस रु फेर व्हाट टाइम do you come back home? What time do you come back home? If you want, you can also use return. What time do you return home? Right? Or else you can also say, what time do you come back home? What time do you come back home? ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଫେରେ, ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରେ ଫେରେ. I come back by 6 p.m. or 6 in the evening. 6 in the evening. I come back by ମୁଁ 6ଟା ସୁଦ୍ଧା ମାନେ ଡଟ୍ ତ 6ଟା କହି ପାରିବିନି, ରାଇଟ୍? ସେଟା ସୁଦ୍ଧା I come back by 6 p.m. in the evening, right? I come back by 6 p.m. in the evening. एटा जो ट्रांसलेशन वर्तमान मु कली, don't you think it's easy? Don't you think it's very commonly used in our day to day life? It is. It is. तेणु आ परे आपण एई जो सेंटेंसेस गुडी को निश्चित प्रैक्टिस करंतु, ए वीडियो टी को बारंबार देखंतु, बारंबार देखि कि जो गुडा को आपनकर बुझा पड़ला ताकू प्लीज नोट इट डाउन हला। त एबे मु जो सेंटेंस गुडी को पढिली, I am going to read it out. Please listen to it carefully, okay? So Rita and Alok, this is a conversation. Okay, मोर जो conversation टा मु करिवार उद्देश्य आपण ध्यान दे कि सुनतु. Why am I reading it? आमे तो इस ट्रांसलेशन तो सॉरी गलाइटे, I can leave it like that, right? Why I am reading it? देखो तो गोटे कथा मन रखंतु, आपण आज इंग्लिश शिखुचंती, it's for your communication, in order to converse smoothly with the people, right? तेणु आपण एमती तो कथा हे परिबेनी कि you speak in a flat tone. जेमते कि सपोज आपण जेमते कि का संगरे कथा होचनी कि आपण पचाला जे how are you, आपण को कहबे I'm fine, how about you? ए बळे त आपण उत्तर देबेनी, आपण ए बळे कहबे जेमते एटा नेचुरल साउंड होबो, राइट? Hi, how are you? I'm fine, how about you? Right? तो ए बळे टोन टा आपण को चेंज करे कि कहबो ही पड़िबो जदी if you want to really make an effective communication skills, right? So जदी सेमिति आपण इंटोनेशन को डेवलप करिया चाहते जोटा कि आमे we also call it as voice modulation, which is so important. कहना हुए तो आपण बहुत सारा इंग्लिश न जानि छथि, बहुत वोकैबुलरी आपण को नै जदी, किंतु आपण को वॉइस मॉड्यूलेशन अछि और बहुत भलो आर्टिकुलेशन करि कहि परछन ना, आपण जेति कि भी जानि छथि बहुत सुंदर भाबरे कम्युनिकेट करि परिबे. And that is the magic of changing your tone. And that is why I'm reading this dialogue, so that you can understand that when we are talking to people, how should you sound? How should you sound natural? You should not sound flat. So please listen to me carefully. So Rita says, do you go to the office every day? Yes, I do. What time do you leave home? I leave home at 9 in the morning. How do you go to office? I go to the office by bus or by my bike. Is there traffic on the road? Yes, there is. Do you reach your office on time?
Yes, I do. What do you do in your office? I work on my computer and check emails. Do you take a break? Yes, I take a break in the afternoon. What time do you return from home, from office? I return by 6 in the evening, or you can also say I come back by 6 in the evening. Right? So this is how you must read the dialogues. आज आम प्रेजेंट सिंपल टेंस रे जो टेंसेस गुड़िक आम शिखिले जो आम ट्रांसलेशन सेंटेंसेस गुड़िक शिखिले एटा को मु डायलॉग प्रैक्टिस हिसाब रे जोटा आपन को डेमोन्स्ट्रेट करके देखैली आपन सेही भले डायलॉग्स बहुत सारा रिसोर्सेज अछि अवेलेबल अछि आपन प्रैक्टिस करंतु आपन इंटोनेशन को डेवलप करंतु और सबुटु इम्पोर्टेंट always read aloud, always read aloud, and that is the key to have fluency in your language. যেତେବେଳେ ଆମେ fluency କଥା କହୁ ନା ଯେ you should speak non-stop, you should speak in a flow, and that can be developed when you start reading aloud. When you start reading aloud from, like, anywhere you are there, but you, when you're reading, you should read at the little more pitch as you do जो normal आपन pitch अछि ताटू टिके अधिका pitch रे आपन कहबे and read aloud, and that is the key to have fluency in your language. ଆପଣ ଆଜିଠୁ minimum every day 20 minutes read out କରନ୍ତୁ and କାଲି ହିଁ ତାର difference ଆପଣ ଜାଣି ପାରିବେ. ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ବୁଝନ୍ତୁ କି ନ ବୁଝନ୍ତୁ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁନି କି ମୁଁ ଏଟା କିଛି ବୁଝୁନି, don't think about that. Just try to read aloud and have the flexibility in your mouth. ଆଉ ଯୋଉଠି ଆପଣଙ୍କର full stop ଅଛି have a pause, and ଯୋଉଠି comma ଅଛି have a small pause and continue to read like that. Spoken English ଆମେ ଶିଖିବାକୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, କିନ୍ତୁ always remember there is little bit of hard work and effort to it. And when you make up your mind that I am going to put my best efforts, then nothing is impossible. Nothing is impossible. Everything is possible. When you think that you can do it, and if you have not done it yet, start doing with a new approach and make it possible every moment. And the most important thing, ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବେ, ଆପଣ ଯଦି କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା, the key is to create that kind of environment, to create an English speaking environment. ଆପଣ ଯୋଉଠି ବି ଯାଉଛନ୍ତି ଇଂଲିଶରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଂଲିଶରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, କିଛି ଯଦି ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଇଂଲିଶରେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ବୁଝନ୍ତୁ କି ନ ବୁଝନ୍ତୁ ଇଂଲିଶରେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯଦି କିଛି ୱାଚ୍ କରୁଛନ୍ତି try to follow that what you are watching. And ଆପଣ ଯେ କିଏ ବି ଆପଣଙ୍କର ଯିଏ ୱେଲ୍ ୱିଶର ଅଛି, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ମୋଟିଭେଟ୍ କରେ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ସ୍ପିକିଂ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ without any hesitation, and you see the difference. And you see the difference. And always remember there is a background work. When you want to speak in front of people, you always have a background work, and believe in that work. Always have lot of patience to work for what you dream and what you want to achieve. So wish you all the best and keep learning. Until then, take care and keep learning. Jai Jagannath.